Hi friends, good evening. I am Dr. Ashutosh Gupta and today we are going to talk about entity. एक किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसमें एक suspicion and perseverance has led to this diagnosis. Okay, so we are going to talk about syndactyly. Syndactyly meaning thereby कि जो digits होती हैं हमारी fingers होती हैं हाथ में और toes होते हैं पाँव में, वो आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं. राइट. दिस सिंडेक्टाइली कैन बी स्किन एंड कुड बी बोनी ऑल्सो, बट इस केस में जो आज मैं दिखा रहा हूँ उसमें वी आर हैविंग अ सबक्यूटेनियस सिंडेक्टाइली. राइट. सो अ सस्पिशन ऑफ अ सिंडेक्टाइली एंड अ फॉलो अप लेड टू दिस डायग्नोसिस. तो वो दिखाता हूँ मैं. This is the case that we are seeing, right? So this is the hand. It looks good. ये 4 fingers हैं and then we can see the thumb, right? But ये wrist में ये जो palm में हम देख रहे हैं, so we are identifying कि third and the second and the third fingers of the left hand, so they are joined. So okay, so suspicion of a cutaneous syndactyly of the left hand. The right hand भी ऊपर से आया है ये, right? And then we are seeing this right hand. तो राइट हैंड का भी ये थर्ड एंड सेकेंड एंड द थर्ड डिजिट्स दे आर सॉर्ट ऑफ फ्यूज्ड. ये लेफ्ट हैंड है, राइट. तो सेकेंड एंड थर्ड डिजिट्स दे आर सीमिंगली क्यूटेनियस सिंडेक्टाइली लग रही है इसमें, राइट. एंड देन वी फॉलो इट आउट अक्रॉस एंड देन वी सी कि ये राइट फीट है, राइट. तो ये टोज बिल्कुल ठीक दिखाई देते हैं, राइट. और इसी के नीचे ये लेफ्ट फीट है, ठीक है. इसमें भी सेकेंड एंड थर्ड टोज में सिंडेक्टाइली है. Again we are trying to see the right hand which is coming from above. right hand जो ऊपर से आ रहा है तो इसके digits से fused है. इसमें ऐसा लगता है कि second, third, fourth digit fused है, right. ये left hand है, right. So what we are dealing अब ये left toe है, right. So what we are dealing with the cutaneous syndactyly involving the second and the third digit, right, in both the hands as well as in the left feet, right. ये दिख रहा है. एंड दिस इज अनदर केस postnatally how this digits they are fused, they look like. फिंगर्स की काउंटिंग और सो वी कैन आइडेंटिफाई द पॉलीडेक्टिली कि प्री एक्सियल है कि पोस्ट एक्सियल है. एंड देन द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द फिंगर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. और यूजुअली एक ऑटोसोमल डोमिनेंट अपवर्ड सिंड्रोम होता है जिसमें मिटन हैंड्स हो जाते हैं, लेकिन एक सिंडेक्टाइली भी हो सकती है or which is usually being missed, right. So what we need to see is this opening and closing of all the fingers, right. So in this case a suspicion, the baby was not opening up the fingers, so the suspicion and a close follow up in which we are able to identify the syndactyly in the second and the third fingers of both the hands as well as the second and the third digits toes of the left feet, राइट. इवन दो द फेस वॉज नॉर्मल एंड जो क्रेनियल बोन्स होती हैं, जो क्रेनियोसिनोस्टोसिस जो सूचर्स होते हैं, क्रेनियल सूचर्स जो होते हैं, उनमें बोन विंडो वॉज प्रेजेंट एंड देयर वाज नो एलिमेंट ऑफ ए क्रेनियोसिनोस्टोसिस. ओके, सो वी आर नॉट कॉलिंग इट एज एन एपर्ट सिंड्रोम बट प्रोबब्ली सिंडेक्टाइली वाज देयर. एंड जो पोस्टनेटल मैंने आपको दिखाई, इट इज़ अ डिफरेंट केस. सो यूजुअली दे आर बीइंग मिस्ड, सो वी वर लकी एनफ टू पिक इट अप, राइट. सो मीनिंग देयर बाय दैट fetal medicine is all about a suspicion and the perseverance and making those diagnoses, right. Thank you very much for your patient listening.